खोपरे की पुड़ी बताने वाली हूँ। आधा सूखा खोपरा घस लेना, एक छोटी कटोरी उड़द की दाल, थोड़ी सी इमली, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हींग और सूखी मिर्ची। पहले उड़द की दाल भून लेना। ऐसे लाल थोड़ा भुनना चाहिए। सूखा खोपरा उधर खोपरे को भी सुनहरे कलर से जैसे भून लेना। उड़द की दाल, लाल मिर्ची डालने के बाद जीरा, थोड़ी सी इमली, मिर्ची पाउडर, हींग, नमक पाउडर, दाल बारीक होने के बाद खोपरा डालना। आप पूरी रेडी हो गई है। थैंक यू। इसको दो यार।